Hello, everyone, and very good afternoon once again. So, welcome everyone. So, it's a good afternoon once again. So, let's see who all are live with us now. Ravi Ranjan is there. Okay. Then some people are joining. फटाफट से join कर लें एक बार so that we can start the topic. आज का जो हमारा टॉपिक है that is a small topic but it is very very important topic. और ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में बहुत प्लेसेस पे काम में आता है। ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, इस टॉपिक में नहीं, बहुत सारी प्लेसेस पे काम में आने वाला टॉपिक है। सो वेदर यू आर डूइंग लॉगरिथम, यू आर डूइंग इक्वेशन और एनी अदर टाइप ऑफ कैलकुलेशन, किसी भी तरह की कैलकुलेशन अगर आप डील करते हैं, देन दिस चैप्टर इज रेलिवेंट, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। आगे जाकर के अगर हम बात करते हैं, चाहे अकाउंटेंसी है, कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सब जगह पे इस चैप्टर का यूज होने वाला है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप पढ़ना चालू कर चुके हैं ऑलरेडी फ्रॉम क्लास 8 से, तो मिनिमम आप इसको पढ़ ही रहे हैं। ऑलराइट, सो सम मोर पीपल आर लाइव नाउ। सुधाकर इज लाइव, देन निशी, विधि पटेल, कंजा कौशर, शेख जमील, नैन्सी, अतुल, अवनी, आनंद, पलक, नुसरत, शुभम, दिव्या, खुशबू, देन प्रज्वल, रवीना, रोशाली, किंजल, रोशनी, हितेश, निकिता, भावेश, जानवी, मुस्कान, रेणुका, मधु, ग्रेट। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, चलिए, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या हमने अभी तक कुछ मिस किया है। नो, यू हैवंट मिस्ड येट। अभी तक आप लोगों ने कुछ भी मिस नहीं किया है। तो चैप्टर की बस शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं विद लॉ ऑफ इंडिसेस। ओके, चलिए लॉ ऑफ इंडिसेस की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें समझना है इंडिसेस का मतलब क्या होता है और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की कैसे हम उन चीजों को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इंडिसेस का मतलब किससे है। इंडिसेस का मतलब है पावर्स के साथ में। जब कोई एक ही नंबर बार बार लिखा जाता है, रिपीटेडली लिखा जाता है, लाइक 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो उसको हम शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें सिखाएगा कौन, लॉ ऑफ इंडिसेस। तो इसका बेसिक मतलब किसके साथ में है, मल्टीपल्स के साथ में है कि कोई चीजें बहुत सारी बार लिखी है, बहुत बार लिखी है, उसके बीच में प्लस का साइन या मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम उससे कैसे डील करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सी, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, लेट्स से आई हैव रिटन ए प्लस ए प्लस ए। नाउ व्हाट इज द टोटल, इसका टोटल क्या होगा, इसका सम क्या होगा, a plus a plus a. So I have written a 3 times. Therefore, इसका रिजल्ट क्या होगा, 3a. If I am writing for 3 times, then the result is 3a. If I write a for 10 times, अगर मैं इसको 10 times लिख लेता हूं, then what will be the result? It will be 10a. Okay? तो अगर मैंने इसको ओवरऑल 10 टाइम्स लिखा है, देन रिजल्ट विल बी 10a. तो जितनी बार आप लिखेंगे एडिशन होगा, एंड वैसा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ आई एम राइटिंग 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, आई हैव रिटन 5 4 टाइम्स। मैंने 5 को कितनी बार लिखा है, 4 टाइम्स, एंड देयर इज एडिशन इन बिटवीन। इन बिटवीन क्या है, प्लस का साइन है। सो 5 इज रिटन 4 टाइम्स, so what will be the result, 4 multiplied by 5, that is 20. So 20 is your answer, 20 is the result. All right, now instead of plus, if there is multiplication, then what will happen, if I say we have to multiply a multiply by a multiply by a. So a is written 3 times, but instead of plus, this time there is multiplication. So multiplication लिखा है इस बार, so क्या रिजल्ट होगा, a into a into a. A is written 3 times, so a raised to the power of 3. a का पावर में हमने क्या यूज किया है, 3. Okay, so here 3 is
the power, and it is also known as index. 3 is the power or the index, and this A is known as the base. This A is known as base. All right. Now, if I write 5 multiply by 5, multiply by 5, and multiply by 5. I have written 5 4 times. So what will be the result? 5 raised to the power of 4. Now, wherever required, आप इसको simplify कर सकते हैं. जहां simplification की requirement नहीं है, this can be your answer. तो अगर आप इसको multiply करते हैं 5 into 5 into 5 into one more 5, then it is 625. So in this way, we can easily calculate. तो ये हमारा एक बेसिक पॉइंट है, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज if I have written root of a, root of a. अब रूट के ऊपर अगर कुछ भी नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज स्क्वायर रूट. बाय डिफॉल्ट ऑलवेज कौन सा रूट होता है? इट इज द स्क्वायर रूट. एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज a रेज टू द पावर ऑफ हाफ. ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसको अच्छे से समझ ले एक बार. a एंड देन स्क्वायर रूट का साइन लगा है, देन व्हाट यू हैव टू डू, a टू द पावर ऑफ हाफ. नाउ इफ a and then cubic root is written, root के अंदर क्या लिखा है? 3. that means it is cubic root or you can say cube root. so जब ये cube root होता है, it can be written as a to the power of 1 by 3. a का पावर कितना लिखेंगे? 1 by 3. okay, now if it is fifth root, अगर fifth root है तो क्या लिखेंगे? a raised to the power of 1 by 5. a raised to the power of 1 by 5. All right. And one more thing, if it is nth root लगा है तो आप लोग क्या लिखेंगे? a raised to the power of 1 by n. a raised to the power of 1 by n. so इस पैटर्न में आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, we can write. रूट को पावर की फॉर्म में हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस. फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? लेट्स राइट हियर द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस. इन दिस लॉ इट इज रिटन a to the power of m and multiply by a to the power of n. a to the power of m is multiplied with a to the power of n. Then what will be the result? Then its result is a raised to the power of m plus n. a raised to the power of m plus n. Okay. Now let's take some questions based on this property and based on the above points. So जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं with the help of example. All right. चलिए फटाफट से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. If I am writing 2 to the power of 3 multiplied by 2 to the power of 4, then what will be the result? Now यहां पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, when base is same तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. दोनों का बेस क्या है? सेम है. तो when base is same you have to add the powers. So your result will be 2 to the power of 3 plus 4, that is 2 to the power of 7. Yes. So Yash and Madhu has given the answer. This is the correct answer. Similarly, if I take one more example, root of 2 multiplied with cube root of 2. क्या लिखा है मैंने? रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2. तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे? पावर की फॉर्म में लिखेंगे. ऑलराइट. रूट ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया? 2 to the power of
half, and cubic root means 2 to the power of 1/3. 2 to the power of 1/3. Now, base is same. You can apply the property. So 2 to the power of 1 by 2 plus 1 by 3. Now take the LCM. LCM कहाँ है? Power के अंदर ही आपको LCM लेना है and you will get your result. So 2, what is the LCM of 2 and 3? 6. So therefore, what will be your final answer? 2 raised to the power of 5 by 6. 2 की पावर में कितना लिखा है हमने? 5 by 6. So this is your answer. This is your answer. All right. So in this way, we can simplify. Now let's take one more example. एक और example ले लेते हैं. If it is written, let's say, cubic root of 3 and fourth root of 3. 3 का cubic root and 3 का fourth root. इसको simplify करना है. तो first of all, what you have to write? 3 to the power of 1/3 and 3 to the power of 1/4. तो पहले आपने क्या किया? उसको पावर फॉर्म में लिखा है. Now it's time to apply the property. So 3 to the power of 1 by 3 plus 1 by 4. Now you can take the LCM and simplify. So what will be the LCM? LCM is 12 and 4 plus 3. So therefore your final answer is 3 to the power of 7 by 12. 3 to the power of 7 by 12. Yes, so everybody has given the answer. Yash Agarwal, Vidhi Patel, Madhu, Next. Okay, let's take example. You have to find your correct answer. So 2 multiplied by 3 becomes 6. Now, x के power में आप क्या लिखेंगे? 1 by 2 and minus 1. Now, let's simplify. क्या बचेगा? 6 x to the power of minus half. X to the power of minus half. Now, put the value of x. X का value आपको put करना है. तो x का value है 4. 4 to the power of minus half. Okay. Now, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको हमें पॉजिटिव करना है एंड पॉजिटिव करने के लिए वो नंबर का क्या होगा? रेसिप्रोकल. तो 4 का क्या बन जाएगा? 1/4. जब आपका पावर नेगेटिव है उसको हमें पॉजिटिव करना है तो क्या स्टेप है? रेसिप्रोकल द नंबर. तो 6 4 की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 1/4 एंड देन पावर विल बी हाफ. नाउ पावर हाफ मींस स्क्वायर रूट. तो 1/4 का रूट कितना होता है? 1/4 का रूट होता है 1/2. So 6 into 1/2. Therefore, your final answer is 3. तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है 3. Understood? All right. तो ऐसे केसेस में आपको यही ध्यान रखना है. तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक स्टेप लिख करके एक्सप्लेन किया है सो दैट अभी आपको समझ में आ जाए. लेकिन एक बार टॉपिक आपने समझ लिया तो ये सारे स्टेप्स इतना डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आप बहुत फास्ट उसको कंप्यूट कर सकते हैं. तो यू कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट. ऑलराइट. ओके. सो लेट्स टेक वन मोर सिमिलर एग्जांपल ताकि अगर किसी को डाउट है देन वो भी क्लियर हो जाए. So this time I am taking some other figures. 4, then x to the power of minus half multiply by 10 x to the power of 2. Now calculate if value of x is 2. You have to simplify and x का value कितना given है? 2. So first of all 4 into 10 is 40. 4 into 10 is 40. Now x की पावर में क्या बचेगा? माइनस हाफ
and then plus 2. Minus half and plus 2. So 40 into x to the power of 3 by 2. 40 into x to the power of 3 by 2. Now x का value क्या है? X का value है 2. So now put 2. So 2 and power is 3 by 2. Power कितना हो गया आपका? 3 by 2. Now you can simplify and get the answer. Now अभी इसको simplify कैसे करेंगे? Now see, 3 by 2 means power is 1.5. 3 by 2 का क्या मतलब होता है? 1.5, right? That means you can split this 2 to the power of 1 and 2 to the power of half. 2 की पावर 3 by 2 है, हमने इसको स्प्लिट कर दिया, 1 अलग एंड हाफ अलग. Now simplify. 40 into 2 is 80 and then root of 2. अगर आपको डेसिमल में कैलकुलेट करना है, now find out the root of 2 and multiply with 80. So what is root of 2? 1.414 multiply by 80. You will get the answer in decimals. So easily आप कैलकुलेशन कर सकते हैं using this law of indices. तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा. ये क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट है, इसको सॉल्व करने में हार्डली 15 to 20 seconds लगते हैं. So not much time is required. Only requirement is that you have to practice. And for practicing, I will be giving you enough additional questions. बहुत सारे additional questions मैं आपको दे दूंगा ताकि you can practice a lot. All right? Okay. Now let's take one more example. Example number 2. So that अगर किसी को डाउट होगा, again यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. Now this time there are two numbers. First one is 6a b square c cube. This is multiplied with 4 b to the power of -2, c to the power of -3 and then d. ओके, तो जो भी सिमिलर है उन सबको आपको पास पास में लिख लेना है. 6 into 4 is 24. Okay, now a is written only one time, so you are writing a as it is. b, now b की पावर में 2 है as well as -2 है, to bring them together, so b to the power of 2 and -2. c is having power 3 and -3, and at last it is d. So what is your result? 24a. b to the power of 0. Anything to the power of 0 is always 1. Then c to the power 0 is also 1. And what is left? D. So therefore, your final answer is 24a. Okay, perfect. Hini Kumar is asking how to download the app. So you can easily download from Play Store. Many students have already downloaded. काफी ने already कर लिया है process, और जिसने नहीं किया है वो easily कर सकते हैं from Play Store. So 24 AD is the correct answer. Second, पहले हमने किया था multiply, now it's division. So it can be written as a to the power of m minus n. क्या बन जाएगा यहाँ पे? a to the power of m minus n. तो जब भी ये डिवीजन में है तो will be negative. To the power 2 cube. 2 cube is your answer. Okay. Perfect. So I think this is all right till here. Next, one more example. 5 to the power of 3 divided by 5 to the power of 4. So what you have to do? 5 to the power of 3 minus 4. So what will be your result?
5 raised to the power of minus 1. 5 raised to the power of minus 1. And this can also be written as 1 upon 5. 5 raised to the power of 1 can also be written as 1 upon 5. So these are some basic rules जो आपको पता होने चाहिए एंड ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी किए हैं बट फिर भी मैं एक बार आपको वापस से कुछ रूल्स याद दिला देता हूं एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज ऑलवेज 1 a का पावर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड और यू कैन से इनफाइनाइट ओके देन a to the power of minus m to do reciprocals को 1 upon a to the power of m. All right. So Priya is saying we have studied these rules in class 10th. Yes, correct. तो क्लास 9th में भी ये सिमिलर रूल्स थे एंड कुछ क्लासेस में स्कूल्स में 6th 7th 8th के अंदर भी ये सारे रूल्स होते हैं. All right. Next. So नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इलस्ट्रेशन आपके पास अवेलेबल है. यस, थर्ड वन. Find the value. Now this time you have to find the value of this question. So 4x to the power of minus 1 divided by x to the power of minus 1 by 3. So how we can simplify? 4 is as it is. Now numerator is x to the power of minus 1. Denominator में power कितना है -1/3. जैसे वो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन विल गेट चेंज तो साइन चेंज हो जाएगा तो इट विल बिकम +1/3. तो x रेज टू द पावर ऑफ -1 +1/3. डिनोमिनेटर से पावर जब भी न्यूमरेटर में आ जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो भी साइन चेंज हो जाएगा. तो जैसे हम लेफ्ट से राइट भेजते हैं तो प्लस का माइनस होता है, राइट से लेफ्ट भेजते हैं तो भी प्लस का माइनस होता है. इन द सेम वे यहाँ पे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जा रही है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ रही है देन ऑल्सो साइन विल गेट चेंज. तो साइन आपका चेंज हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक द एलसीएम एंड फाइंड आउट द आंसर. सो 4x to the power of -2/3. 4x raised to the power of -2/3. अगर आपको x का पावर पॉजिटिव शो करना है then you can write 4 upon x to the power of 2/3. So in this way you can easily write. Okay, so no need to worry. Now Ashfaq is saying I have not studied maths since primary school and there were no maths teacher in school so I don't know anything about it. Please suggest me how can I build my basic and approach this level as well. So please advise me. So you can easily download the Students Clinic app and at that place you can contact. You can write down to improve the basics. So आपको वो easily available हो जाएगा content and you can do that. Okay. Okay, perfect. Now, so this is the final answer. Let's move on. Example number 4. Example number 4 is quite lengthy, but not much lengthy. 2 raised to the power 2 into a to the power of half. ये power only a पे है. Power is available on a. Then a to the power of 2/3. 6 into a to the power of -7/3. 9a to the power of -5/3 and a to the power of 3/2. ओके. नाउ सब कुछ एक ही टर्म्स में गिवन है तो सारी पावर्स को आपको एक साथ में लेके आना है. इट इज वेरी इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेंदी नहीं है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस. तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक साथ में ले लेंगे. लेट्स ब्रिंग द नंबर्स टुगेदर. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 9.
सारे नंबर साथ में आ चुके हैं। नाउ न्यूमरेटर में a का वैल्यू क्या है? a टू द पावर ऑफ हाफ प्लस 2/3 एंड देन माइनस 7/3। तो सब कुछ हमने लिखा है इन द पावर ऑफ a अपॉन डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ minus 5/3 and a to the power of 3/2 3/2। now numerator and denominator को दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर लें। so it is 2 and then 3, so what is left? 4/3। numerator में what is the LCM? LCM will be 6, LCM is 6, then 3 plus 4 and then minus 14 minus 14. What about denominator? Again, LCM is 6, then minus 10 plus 9. Now let's simplify further. आगे इसको फिर से सॉल्व करते हैं। So 4/3 a to the power of minus 7/6 and denominator is a to the power of minus 1/6. Now bring the powers together. पावर्स को साथ में लेके आना है। सो 4/3 a टू द पावर ऑफ -7/6 एंड +1/6। तो यहां ध्यान क्या रखना है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, न्यूमरेटर में आते ही इट विल बिकम पॉजिटिव। in numerator the power will become positive, so therefore the required answer will be 4/3 a to the power of -1/6। a का पावर में कितना आ चुका है? नो, -6/6, -6/6। so you can write in this way 4/3 a to the power of -1, or you can write 4/3 a। okay, 4/3 a आप लिख सकते हैं। next is put the value of a का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें and you will get the answer। so 4 divided by 3 into 4, 4 will get cancelled. Your answer is 1/3। So 1/3 is your final answer। So I think there is some network issue। Okay, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। Let's bring again the screen। फटाफट से स्क्रीन को ले आते हैं। Yes, this was done and the answer is 4/3। Final answer is 1/3। So in this way you can easily get your answer। Perfect। All right everybody, because Mr. is asking in previous two sessions also, you can get the students clinic application, and on that application you will get regularly assignments of each chapter, each and every topic, और उससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। Kishan is asking you are from which place? I am from Jodhpur, Rajasthan, Kishan। Then Harsh कुमार इज आस्किंग, हर्षद कुमार इज आस्किंग कोर्स कब तक खत्म होगा? सी हर्षद, अभी तक कोर्स शुरू हुआ है एंड खत्म होने में तो भी काफी टाइम है। अराउंड 3 months यूजुअली आर देयर। तो अप्रोक्सीमेटली मार्च यू कैन स्टिमेट, मार्च और इधर अप्रैल। ओके, एग्जाम्स होते हैं आपके जून में। ओके, सो आई थिंक नाउ इट इज परफेक्टली विजिबल।
Okay. Now, let's move on the next law, third property, third law of indices. Now, the third law is a to the power of m and whole to the power of n. Now, there are two powers. First power is on a and second power is after the bracket. So it makes no difference. आप दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं. So your result will be a to the power of mn. तो जब दोनों powers अलग अलग लिखी है, then you can multiply them. A to the power of m whole to the power of n. Then you can write a to the power of mn. Let's take some example. If I am writing 3 to the power of 2 whole cube, then you can write this 3 to the power of 2 into 3, that is 3 to the power of 6. So in this way, you can write down. Okay. Avni Singhal is saying, my father's name is also Gaurav and he is also CA. That's great, Avni. Akhil is saying, are you in practicing CA or only teaching? I'm into both teaching as well as practice. कुणाल इज आस्किंग अबाउट कैलकुलेटर. सी कैलकुलेटर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें सारे बेसिक फंक्शंस होने चाहिए. देन मेमोरी फंक्शंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीटी बटन होना चाहिए. जीटी मींस ग्रॉस टोटल, तो जिसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल है. दैट यू कैन सेलेक्ट. ब्रांड डज नॉट मैटर बट क्वालिटी मैटर्स. तो क्वालिटी बहुत मैटर करता है. अच्छा, कैलकुलेटर लेने में एक और चीज ध्यान रखें. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, आप लोग भी देखते होंगे, कि जब हम फोन परचेज करते हैं, है ना, जब हम फोन परचेज करते हैं तो हम उसमें पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाते हैं. उसका स्क्रीन का डायमेंशन क्या है, उसका डायगोनल कितना है, कर्व कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या क्या नहीं दिख. लेकिन फिर भी ये मोबाइल फोन हमारे एग्जाम में काम में नहीं आता है. ये हमें किसी डिग्री दिलाने में काम में नहीं आता है. और जब बात आती है एक छोटे से कैलकुलेटर की, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बहुत ही लो क्वालिटी का, आप समझ लीजिए 100-150 रुपए में जो बेसिक से भी बेसिक वाली क्वालिटी है, वो परचेज कर लेते हैं. वो लेने में प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब होता है, जब ये पीस गिरता है. जब ये पीस गिरता है तो कई बार होता है, गिरने के बाद बिखर जाता है. इसका एक टुकड़ा कहाँ चला गया, दूसरा कहाँ चला गया, स्क्रीन आगे वाले के पास है, बटन पीछे वाले के पास पहुंच जाते हैं. तो ऐसा कई बार मैंने देखा है. एग्जाम हॉल में भी ये प्रॉब्लम कई बार होती है. डेस्क से हमारा अगर कैलकुलेटर गिर गया और वो टूट गया, तब आपके पास वहां पे दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो इसलिए ऐसे केस में आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है. कैलकुलेटर की बिल्ड क्वालिटी जरूर चेक करें. जैसे आप मोबाइल फोन की चेक करते हैं, टू व्हीलर की चेक करते हैं, फोर व्हीलर की चेक करते हैं बिल्ड क्वालिटी, वैसे ही कैलकुलेटर की बिल्ड क्वालिटी आप चेक करें कि वो 10 बार अगर गिर भी जाए तो वो खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं. और फिर उसके बाद आपको उसके फंक्शंस भी देखने हैं. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. जो अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाले कैलकुलेटर्स हैं, वो भी इजिली 400-500 में आ जाते हैं. तो अगर 200-300 के पीछे अगर आप पूरा 6 मंथ्स के ऊपर दाव खेल लेते हैं, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कैलकुलेटर खराब हो गया, मतलब हमारे 6 महीने पूरे खराब हो सकते हैं. तो ऐसी रिस्क नहीं लें जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेटर. ओके, तो बजट इश्यू है तो फोन का बजट कम करें, लेकिन कैलकुलेटर का बिल्कुल भी ना करें. ऑलराइट, चलिए, तो एक ये पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया था, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया. एंड सेम चीज कई बार होती है पेन के साथ में. अब बहुत से लोग आपने देखा होगा पेन कब परचेज करते हैं, जब एग्जाम आने वाला है उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले पेन का पूरा सेट लेके आते हैं. अब जब आप नया पेन, नई वैरायटी, नई स्टाइल का पेन लेके आ रहे हैं, तो एग्जाम में पता है क्या प्रॉब्लम होती है, उस पेन की आपके हाथ को हैबिट नहीं है. उस पेन की आपके हाथ को हैबिट नहीं है और आप नया पेन एग्जाम में यूज कर रहे हैं, तो एग्जाम में आपको नॉन स्टॉप लिखना है, 2-3 घंटे उसको लगातार यूज करना है.
जो पेन अभी आपने फिक्स कर लिया, सही चल रहा है, तो उसी टाइप के पेन को आप रेगुलरली यूज करें, पेन को चेंज नहीं करें। अगर आप पेन चेंज करेंगे, ग्रिपिंग चेंज होगी, तो हाथ को इफेक्ट होगा, आपकी स्पीड अफेक्ट होगी, राइटिंग अफेक्ट हो जाती है। राइट, बेसिक चीज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो दिस वी हैव डन। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। A, let's take 5. 5 to the power of 6 whole to the power of 1 by 3. 5 to the power of 6 whole to the power of 1 by 3. So दोनों powers क्या होगी? Multiply. You can multiply them. So what is left? 5 square, and 5 square is 25. So 25 is your answer. Then Valentina is saying, can you say in English? I don't understand. Okay. All right. So I'm using both the languages, Hindi as well as English, so that everybody will able to understand. So Valentina, we have done this question now. 5 raised to the power of 6 multiplied by 1 by 3. So what is the answer? It is 5 square, that is 25. 25 is the answer. All right. Now, now the next one. Next law is just a reverse law of this. If I say A into B whole to the power of n, A multiplied by B whole to the power of n. So this power n applies on both A as well as B. n का जो power है दोनों पे apply होगा. So you can write A to the power of n multiplied by B to the power of n. So this power will be applicable on both of them. Let's take one example. 5A to the power of 2. So this power will apply on 5 as well as A. So your result will be 25A square. 25A square. Okay. Kunal is saying this is the model number. See, I don't have the list of calculators. So please don't share me the model number. You can check what I have listed you. All right. Sanya is saying paper math will be objective. Yes, 100% objective is there, Sanya. Rushali is asking, can you see my query? Yes, Rushali. So Rushali is asking when you will discuss the assignment question. I have already discussed the questions. तो आप उसमें से देख सकते हैं. You can see that video once again. Questions were already discussed. Shiv Gupta is from Hindi medium. Okay, Shiv, no problem. Mathematics is basically common for everybody. So maths में कोई ज़्यादा challenges नहीं है. The only difference is the key terminology. All right. So let's move on the next example, example number 5. X to the power of A, y to the power of minus b, and whole to the power of 3. Then x cube, y square, whole to the power of minus a. Now, as per this property, power applies on all of them. तो जो भी ब्रैकेट पे पावर लगी है वो अंदर के सारे टर्म्स पे अप्लाई होगी. So x to the power of 3a and y to the power of minus 3b. Then again x to the power of minus 3a and y to the power of minus 2a. Okay. Now bring the common bases together. So one is x and second one is y. तो जो भी बेस कॉमन है उन सबको पास में लेके आ जाए.
So x to the power of 3a and minus 3a. Y to the power of minus 3b and minus 2b. So what is left? X to the power of 0 and y is having negative power. If you want to write into positive, then just do the reciprocal. So 1 upon y to the power of 3b plus 2a. So this is your final answer. So in this way, you can write the answer. Okay. All right. Now, Motiani Rajesh Kumar is asking, half marks available in the sum? No. Each and every question carries 1 marks, and in exam you will get either 1 or 0 or minus 2 point, not half number. ऐसा नहीं है, अगर आपको आधा क्वेश्चन आता है तो आपको आधा मार्क्स दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा. Your if it is correct, you will get 1 marks. If you have left, then 0. If you have done wrong, then it will be negative 1 by 4. Okay. Now, let's move on example number 6. So, sixth root of a to the power of 4b and x to the power of 6 multiply by a to the power of 2 by 3, x to the power of minus 1 whole to the power of minus b. Now, one by one, apply the power on all of them. Sixth root likha hai. Sixth root means power 1 by 6. Sixth root means power 1 by 6. So you have to apply the power on both of them. So a to the power of 4b multiply by 1 by 6. X to the power of 6 multiply by 1 by 6. This power applies on both. Similarly, power of minus b is also applicable on both. So 2 by 3 multiply by minus b, x minus 1 into minus b. Minus 1 into minus b. Now bring the common bases together. So a to the power of 2 by 3b and a to the power of minus 2 by 3b. X to the power of 1 and x to the power of b. So what is left? A to the power of 0 and x to the power of 1 plus b. Anything to the powers of 0 is 1. So the final answer is x to the power of 1 plus b. Mohammed Anas is asking, positive करना compulsory है or not? See, it depends on your options. अगर options आपको positive way में given है, you can solve accordingly. तो सब कुछ यहाँ पे option के form में रहेगा. So you don't have to take tension. So Valentina is saying, I love your teaching. Thank you for your efforts. That's great. My pleasure, Valentina. Harshad Kumar says, I could not solve additional question bank. Do not worry. I will help you out in solving additional questions as well. Okay. Only thing is just connect on the Students Clinic app and we will practice each and every question. So no need to worry. Okay, now it's time for question number 7, example number 7. X root x is equal to x root x to the power of x. So what will be your answer? Now see, the question is bit very easy. आपको बुक का सॉल्यूशन नहीं देखना है.
जस्ट सॉल्व ऑन योर ओन। बुक का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं देखना है, जस्ट यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन एंड दिस बिकम्स वेरी इजी। Okay, now if you compare both the sides, left hand side and right hand side, what is the base value? बेस वैल्यू क्या है, एक बार सोच के बता दें, एक बार फटाफट से सोच के बता दें, what is the base value on both the sides? Base value is simply x root x. दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड as well as right hand side, base value is same. On left hand side, what is the power? The power is 1. On right hand side, what is the power? X. Power is x. Now this is again a very important rule. When base is same, when base are same, then power gets equal. Power gets equal. तो power क्या हो जाएगी? Equal. So power क्या है? 1 and other side the power is x. Therefore x is equal to 1. This is your answer. तो सिंपली आपने क्वेश्चन को प्यार से देखा और आपके पास आंसर आ जाएगा विद इन 2 सेकेंड्स। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा बिना सॉल्व किए आपके पास आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू 1। तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व। तो x रूट x का पावर 1, x रूट x का पावर x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ओके, now eighth one, example number 8. Let's try this example number 8. Now again this is easy question, but how to do it, let us understand. Root of 9 whole to the power of minus 7, root of 3 whole to the power of minus 5, and then 3 to the power of k. And what you have to do from this question, find the value of k. You have to find out the value of k. So in such cases, what you have to do? Now you can see it is in the form of 3. This term is also in the form of 3. Now we can bring this first term also in terms of 3 because it is root of 9 and we know that root 9 is nothing but 3. So 3 to the power of minus 7. Then root 3 is there, so you can write it down 3 to the power of half and then power minus 5. It is equal to 3 to the power of k. सब कुछ हमने लिखा है in the power of 3 in terms of 3. Now base is same. Bring the powers together. So minus 7 and minus 5 by 2 is equal to 3 to the power of k. Take the LCM. 3 to the power of minus 19 by 2 and 3 to the power of k. So base is same, power will become equal. Base is same, power gets equal. Therefore, value of k will be minus 19 upon 2. So minus 19 upon 2 is your final answer. Okay. All right. So in this way, you can get the result. So this is basically the value of k, minus 19 upon 2. All right. Any doubts still here? Let me know. किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट्स है दैट यू कैन आस्क. So this is basically a small topic, but this is very interesting. Now, after all these examples, we will do the exercise questions and you will find some different patterns of questions also in that exercise. So we will be doing that in detail. Okay.
Akhil is asking, please do the logarithm concept today, and in the next class, we can take the exercise. See, today is only like today's session is dedicated for indices only. आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिसेस के लिए ही है. लॉगरिथम का सेशन नेक्स्ट ही रहेगा और पूरे सेशन में आप पूरा लॉगरिथम ही करेंगे. ओके. ओके, रशिका फातिमा इज आस्किंग एग्जांपल 4 का एलसीएम कैसे निकाला है. ओके, let's move on example number 4 and see the LCM. Okay, so this is the value a to the power of half plus 2 by 3 and minus 7 by 3. So what are the values 2, 3 and 3? इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है. 2, 3 and 3. That means 3 and 2 का एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है. तो एलसीएम आप जैसे लोअर क्लासेस में निकालते हैं सेम वैसे ही आपको अप्लाई करना है. ओके. So 2 into 3 is 6. So this is your LCM. Then a to the power of 6. 6 upon 2 is 3. 3 into 1 is 3. 6 upon 3 is 2. 2 into 2 gives 4. 6 upon 3 is 2. 2 into 7 gives 14. Okay. So in this way, you can calculate. So you are getting a to the power of minus 7 by 6. So this is the method. Okay. So Kishan is saying, I enjoy your teaching. Thank you, Kishan. Hitesh is saying, you are teaching so good. My pleasure. Thank you so much again. Then the next doubt. In example number 8, Pranjal is asking example number 8. See, example number 8, the correct answer is minus 19 upon 2. And we are getting this. So Prajwal, the answer is minus 19 upon 2. And the book is also giving the same answer. So it is correct in the book as well. Okay. All right. Now, before starting the exercise, let's take a break of 10 minutes and then we will be continuing with exercise questions. Okay. So let's have a break.
So welcome back guys. So law of indices का एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 1C। तो फटाफट से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। राइट, चलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नंबर बताता हूँ, आपको नंबर के साथ में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप कर सकते हैं कमेंट में, 4x रेज टू द पावर ऑफ -1/4। इसको हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो x की पावर में भी नेगेटिव पावर है, अगर हम x को रेसिप्रोकल कर दें, पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन नंबर इज सी। So 4 divided by x to the power of 1/4. Okay. So Tambeshwari has given the answer. Ravina has also given the correct answer. Very good. Next. Second, the value of 8 to the power of 1/3. 8 का power 1/3 है, तो अब 8 को कैसे लिखेंगे? 8 can be written as 2 cube. Okay. And then power is 1/3. So 3 and 3 will get cancelled. So what is left? 2 is left. Therefore, the answer is option number C. So second question का भी आंसर आ चुका है आपके पास C. So Vidhi has given the answer. Nancy, Divya, Hitesh, Srishti, Nishi, Harshvardhan, Kishan, Renuka, Akhil, Palak is giving the blank answer. Now it is C. Okay. Hitesh, Vidhi, great. So everyone has given the answer. Third one, the value of 2 multiplied by 32 to the power of 1/5. तो of course 32 को आप simplified form में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 2 to the power of 5 and then whole to the power of 1/5. So 5 and 5 will get cancelled. What is left? 2 into 2 and this is 4. So once again option number C. एक बार फिर से आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर C. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन। दिस टाइम 2 की जगह पे क्या लिखा है? 4, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। सो व्हाट विल बी द आंसर दिस टाइम? ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लिपि हैज गिवन, देन पायल झा हैज गिवन, सृष्टि, सचिदा, ब्रिजित, नितेश, विधि, great. So what will be the final answer? 4 divided by 32 to the power of 1/5. So 2 ka power 5 into 1/5, 4 upon 2 is 2. This time option number B is correct. Correct answer is B. Fifth one, the value of 8 upon 27 whole to the power of 1/3. So power 1/3 दोनों पे apply करना है। 8 can be written as 2 cube, 27 can be written as 3 cube, and दोनों की पावर में यूज करेंगे 1/3. So 3 will get cancelled. So what is left? Just 2 upon 3. 2 upon 3 is the answer. All right. Sixth, the value of, किसका वैल्यू निकालना है? 2 multiplied by 256. 256 का मतलब क्या है? 2 to the power of 8. Then whole to the power of -1/8. So multiply by -1/8. Let's cancel them. So what will be the answer for question number 6? 6 का आंसर एक बार बता दीजिए फटाफट फटाफट। 5th तक सबके आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, so 2 to the power of 1 and 2 to the power of -1. So therefore the result will be 0. Sorry, 2 to the power of 0, that is 1. So option number A. Option number A. Okay. Now next is question number 7.
7 में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको बताना है इट इज अ फ्रैक्शन और पॉजिटिव इंटीजर, ये बताना है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सॉल्व कर दें एक बार फटाफट एंड गिव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर 2 का पावर हाफ है, 4 का पावर 3/4 है। तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3/4। नाउ base is same, power is equal, so half plus 3/2, so it is 2 square and 2 square is 4। 2 स्क्वायर कितना है आपके पास? 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एट वन, 81 x to the power of 4 divided by y to the power of -8 whole to the power of 1/4। पूरे का पावर कितना है? 1/4 है। तो चलिए पहले हम 81 को अप्लाई करते हैं। 81 को क्या लिखेंगे? 3 to the power of 4 multiply by 1/4, x to the power of 4 multiply by 1/4 divided by y to the power of -8 into 1/4। So 4 and 4 is getting cancelled. So let's see what is left now. 3x, 3 बचा है आपके पास, तो 3 की पावर 1 x एंड देन अपॉन में y टू द पावर ऑफ -2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट से बता दें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनीबॉडी विद आंसर? यस, डी ऑप्शन, बिकॉज करेक्ट आंसर जो आपका निकल रहा है इट इज 3x अपॉन y to the power of -2. If you bring them in numerator, it will become y square. So 3x into y square. Option number D. None of these. So Ritti, Tiwari, Nitish, Ravina, Nishigar, Tripathi, Bhavesh, Ravina has given the correct answer. Avni is also correct. Then Payal, Shubham, Sachida Rao. Great. Everyone is correct. Now, question number 9. It's time for question number 9. X to the power of, अभी देखिए x की पावर में कुछ वैल्यूज गिवन है। Now some values are positive, some values are negative, so this type of pattern is known as cyclical order. This type of pattern is known as cyclical order, and in case of cyclical order, power becomes zero because half of the values are positive and other half is negative. Automatically they will get cancelled and power becomes zero, and anything to the power of zero is 1. Therefore you will get the answer 1. So let's cross check also. First is x to the power of a minus b, then it is b minus c, then it is c minus a. Now you can see easily plus A, minus B, plus B, minus C, plus C. Everything is cancelled. So x to the power of 0 is 1. Option number B. Okay. All right. Next one. Question number 10. The value of this is now anything to the power of 0 is equal to 1. Therefore, correct option is C. For question number 10, the correct answer is C. Next, 11. So this time again you have to simplify. 3 to the power of 3 into 2.
So this is how much? 3 to the power of 6. Okay. Then 4 to the power of 2 into 3 is 6. 5 to the power of 6 divided by 3 to the power of 6, 4 to the power of 6, 5 to the power of 6. So everyone has given the answer. So numerator and denominator are exactly same. Each and every term will get cancelled. So result is 1. Option number D is the correct answer. So this is answered by each and every one. That's amazing. Now 12th one, which is true? Options को देख के आपको justify करना है which is the correct option. Now it's very easy question. Check it out. कौन सा question, कौन सा option correct है? Which is the correct option? 2 to the power of 0 and half to the power of 0 दोनों ही क्या होते हैं 1 and 1 cannot be greater than 1. So therefore A and B is wrong. Correct is C because both the sides are equal. Both the sides are equal. Okay. Next. Next is x to the power of 1 by p, y to the power of 1 by p, and z to the power of 1 by r. This is given. All these are equal. Now, what is the requirement? X, Y, Z is equal to 1. Find the value of P plus Q plus R. Now, ऐसे question दिखने में जरूर lengthy होते हैं, but they are very, very easy. Easy है. Let us understand how we have to do such questions. So first of all, x to the power of 1 by p, then it is equal to y to the power of 1 by q, z to the power of 1 by r, okay, and let this be equal to k. इसको आपने equal to क्या लिखा है k. Now compare 1 by 1 with k. You have to compare 1 by 1 with k. So if x to the power of 1 by p is equal to k, therefore x will be k to the power of p. X कितना होगा? K to the power of p. Similarly, y will be k to the power of q. And z will be k to the power of r. So हमने तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है. Now next step is x, y, z is equal to 1. So substitute the values. K to the power of p, k to the power of q, and k to the power of r. Now, all are in terms of k. All the terms are in respect of k. So, 1 can be written as k to the power of 0. Okay. Now, since both the sides are having same base, so power will get equal. So, p plus q plus r. This is on the power of k. So, therefore, p plus q plus r is equal to 0. So, this is your answer. Option number B. Okay. So this question is very much easy. दिखने में आपको first time में लगता है lengthy है, but ये difficult भी नहीं है और ना ही ज़्यादा lengthy है. You can easily solve such type of questions. So in such kind of question, always assume it is equal to k, and then solve with respect to k. That's it. This is one and only the best trick available. Okay. चलिए देखते हैं next question. So everything is in power of y. Okay, सब कुछ y की पावर में है, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लें. a पॉजिटिव, a नेगेटिव, b नेगेटिव, b पॉजिटिव, c पॉजिटिव, c नेगेटिव. सो फर्स्ट थ्री टर्म्स तो आपके सारे कैंसिल हो चुके हैं. व्हाट इज लेफ्ट? y to the power of minus of a plus b, and if you want to make it positive, just do the reciprocal 1 upon y to the power of a plus b.
A plus B. Therefore, the correct answer is option number D. So D is the correct answer. Okay. So Ashish is saying my comments are visible. Yes, Ashish, it's visible. Next, Maheen Khan has also given the answer, option number D. All right. Now let's move on. Question number 15. Which is the true option? कौन सा option true है? ये आपको बताना है. Which is the true option? If you see option number A first, it is written x to the power of 2 by 3 on left hand side, and on right hand side it is cubic root of x square. Now cube root can be written as power 1 by 3. Cube root means power 1 by 3. So basically this is x to the power of 2/3. So left hand side and right hand side both are equal. LHS is equal to RHS. Therefore option number A is correct. A is the correct answer. All right. Ravina is saying 13th question once again. Okay. See, क्वेश्चन नंबर 13 का पैटर्न अभी और आगे आने वाला है. फिर से हम एक बार क्वेश्चन वहां भी करेंगे. चलिए, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ. जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन है x टू द पावर ऑफ दिस इज इक्वल टू y टू द पावर ऑफ दिस एंड इज इक्वल टू z टू द पावर ऑफ दिस, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट स्टेप इज टू लेट देम इक्वल टू k. लेट देम इक्वल टू k. अब सब कुछ वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ k. तो x का वैल्यू निकाला, x की पावर 1 बाय p है. जैसे ही ये पावर दूसरी साइड में जाती है, इट बिकम्स रेसिप्रोकल. तो 1 बाय p का रेसिप्रोकल क्या होगा? p. सिमिलरली y की पावर 1 बाय q है, दूसरी साइड में गया तो k का पावर 1 बाय k का पावर q, एंड देन थर्ड टर्म में k का पावर r. तो तीनों का पावर हमने लिख दिया है. नाउ क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है x y z इज इक्वल टू 1. तो हमने x y एंड z तीनों का वैल्यू पुट कर दिया है, एंड सब कुछ इन टर्म्स ऑफ k यहाँ पे अवेलेबल है. 1 को अगर k के टर्म्स में लिखना है तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? k टू द पावर ऑफ 0. नाउ बेस इज सेम, सो वी हैव टू इक्वल द पावर्स. देयरफॉर p plus q plus r is equal to 0. All right. So this is done. Next one. The simplified value of this. तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है एंड रिजल्ट बताना है. क्या रिजल्ट आने वाला है? तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8. नंबर्स को आपने पास में लिया. 8 का पावर कितना है? -1 है. तो यू कैन राइट इन डिवाइड. तो 16 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर में कितना है? -3 एंड देन +3. y का पावर कितना है? 2 and -2. Let's simplify. So what is your result? Your correct result is 2. X का पावर 0 है, y का पावर 0 है, and your answer is 2. Option number C. Option number C. Now, 17th question. You can solve this in similar pattern. I think this can be done easily. हो जाएगा. Then let's try 18. अभी हम 18th पे आते हैं. 17th is very easy. You can do it by yourself. चलिए 18th पे आते हैं. 18th में क्या लिखा है? होल टू द पावर ऑफ 6 लिखा है. दिस पावर 6 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ देम. ये सभी के ऊपर पावर अप्लाई हो जाएगा. सो लेट्स अप्लाई द पावर x plus y to the power of 2 by 3 into 6. Then x minus y
to the power of 2 by 3 into 6 upon x plus y का रूट लिखा है, रूट मीन्स पावर हाफ, तो x plus y पावर हाफ into 6, then x minus y cube, then square root का divided by 2 and multiply by 6. तो सब कुछ हमने यहाँ लिख दिया है. तो what is left? Let's see. कुछ कैंसिलेशन कर लेते हैं. Power becomes 2 into 2 4 and denominator में power कितना है 3. So x plus y to the power of 4 upon x plus y to the power of 3. Then some more cancellation. X minus y to the power of 4 upon x minus y to the power of 9. Okay. चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें एंड गेट द आंसर. Simplify this and then get the answer. Okay. So anyone with the answer, क्या आंसर आने वाला है? फटाफट से एक बार बता दें. What will be the correct answer for question number 18? सब कुछ आपने सिंप्लीफाई किया. x plus y का पावर कितना बचेगा? 4 minus 3 that is 1 and x minus y का पावर कितना बचेगा? -5. So therefore which option is correct? Option number D. None of these. Okay, next one. Question number 19 is again very simple. I think ये आप कर सकते हैं. 20 भी easy है, but फिर भी मैं 20 आपको करवा देता हूँ. Question number 20 में एक बार आपको करवा देता हूँ. Let's do 20. So 20 के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं. So question number 20. Bracket, second bracket, then again one more bracket, 2 to the power of half, 4 to the power of 3 by 4, 8 to the power of 5 by 6, then 16 to the power of 7 by 8, then 32 to the power of 9 by 10, then whole to the power of 4, and then again one more power, that is 3 upon 25. So क्वेश्चन में सब कुछ अगर आप देखें तो 2 के मल्टीपल में आपको विजिबल है, दिख रहा होगा. तो सिंपलेस्ट वे क्या है? सब कुछ क्या करेंगे? 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? हाफ. देन 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 by 4, देन 2 का पावर 3 इंटू 5 by 6, then 2 का पावर 4 into 7 by 8, then 2 to the power of 5 into 9 by 10, whole to the power of. अब जो बाहर पावर बची है उनको हम एक साथ में लिख सकते हैं, that is 12 upon 25. 12 upon 25. So let's simplify them. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. जो कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल कर लें. तो 2 to the power of half plus 3 by 2, then plus
5 by 2 plus 7 by 2 and plus 9 by 2 whole to the power of 12 by 25. Now सबको ऐड करें and get the result. 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 and 9 is 18, 18 plus 7 is 25. So 2 to the power of 25 by 2 into 12 by 25. So 25 is getting cancelled. So what is left? 2 to the power of 6. So 2 to the power of 6 is an integer. ये क्या है हमारे पास? Integer. Option number B. All right. Perfect. Okay. Then the next one. Let's do the next one. Okay, there are some doubts. Question number 18 में कुछ doubts आ रहे हैं. Let's solve once again. Okay, no problem. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में एक बार यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ वापस से. क्या करना था आपको क्वेश्चन में? x plus y whole to the power of 2 by 3 multiply by x minus y to the power of 2 by 3 upon रूट लिखा है. रूट मीन्स x plus y to the power of half and then x minus y to the power of. Now this time you can see जो ये पावर 3 लगा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, पावर 3 का लगा है, x माइनस y की पावर में लगा है एंड दिस पावर इज इनसाइड द रूट. ये रूट के उधर लगा है. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इट इज पावर 3 देन स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2 सो डिवाइड बाय 2 एंड देन होल टू द पावर ऑफ 6. सबका पावर कितना आ चुका है? 6. नाउ ब्रिंग द कॉमन टर्म्स टुगेदर. सो x प्लस y दोनों को आप लोग साथ में ला सकते हैं टू द पावर ऑफ 2/3 minus half. Okay. Then similarly you can bring x minus y together 2/3 and minus 3/2. 2/3 and minus 3/2 whole to the power में कितना है आपके पास? 6. Now what is left? X plus y. Take the LCM. 4 minus 3 is 1, 1 upon 6. And here x minus y. So it is 4 minus 9 is it is minus 5 by 6. And then whole to the power of 6. Now power 6 will be applied on both of them. दोनों पे power apply होगा. दोनों पे apply होगा. So this becomes your answer. So option number D will be the correct. तो कुछ आंसर हो सकते हैं बुक में आगे पीछे हो गए हों, but the correct answer is option number D. All right. Perfect. So this is done. Now let's try question number 21. फटाफट से 21 पे आ जाते हैं. तो इसको मैं हाइड कर लेता हूं. जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लें 2 सेकंड में और फिर उसके बाद मैं इसको हाइड करके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 21. So remaining students can start with the question. चलिए 21 में आपको क्या करना है? ब्रैकेट 1 minus 1 minus 1 minus x square whole to the power of -1. Again power -1
and then power minus half. Okay. Now, in such cases, open from the middle. बीच में से आपको open करना है one by one. अंदर से हम बाहर की तरफ आएंगे and you can easily get the answer. तो पहले आपने 1 as it is लिखा. This is again 1 minus. Now, this whole thing is raised to the power of minus 1. तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? Reciprocal. So it will become 1 upon 1 minus x square. Then again power and then power. Now, in order to simplify this, just take the LCM. So 1 minus x square minus 1 upon 1 minus x square whole to the power of minus 1 and then minus half. So 1 and minus 1 is getting cancelled. Then minus minus will become plus. Okay. So what is left? We are left with 1 plus 1 minus x square upon x square whole to the power of minus half. So we have applied this reciprocal and reciprocal करते ही पूरा term आपका reciprocal हो गया. Now take the LCM. So x square becomes the LCM plus 1 minus x square. So x square will get cancelled with x square. Now what is left? 1 upon x square to the power of minus half. Power आपको positive करना है, just do the reciprocal. So x square to the power of minus half. Sorry, plus half because आपने reciprocal कर दिया. Now 2 is cancelled with 2. 2 is cancelled with 2. So what is the final answer? The final answer is option number A, that is X. Option number A is your final answer. Okay. Then Ravi is asking about question number 17. See, in 17, you have to write 8 means 2 cube, 27 is 3 cube, 32 is 2 to the power of 5, and 243 is again 3 to the power of 5. So सबको आप powers में convert करें, it will get cancelled and you will get the answer. Okay. So 21 is done now. Let's try next one, 22nd. So before that, let's make some space. Now 22nd. X raised to the power of n whole to the power of n minus 1 by n, and then again the power of 1 upon n plus 1. Okay, so power में ही आपको क्या करना है? LCM लेना है and then solve करना है. Just take the LCM. So x to the power of n, then it is n square minus 1 upon n. This is in power. So n and n will get cancelled. Whole to the power of 1 upon n plus 1. So x to the power of what is left? N plus 1, n minus 1, and then 1 upon n plus 1. Now you can cancel n plus 1 with n plus 1. Your result will be x to the power of n minus 1. X to the power of n minus 1. So this is your answer, option number C. All right. So Rohini has given the correct answer, option number C. Perfect. So again, this was question number 22.
Then the next one, 23. Question number 23. You can start with question number 23 and give the answer. Try करके देखें और उसके बाद आपको आंसर देना है, which is the correct answer. Now, in question number 23, formula is also given to you. A cube minus B cube. A cube minus B cube का फॉर्मूला पहले से ही दे रखा है. सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. नाउ मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी साइक्लिकल ऑर्डर है, नो नीड टू सॉल्व, सीधा आपका आंसर क्या आ जाता है, 0. तो साइक्लिकल कैसे हो रहा है यहाँ पे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. लाइक द फर्स्ट पोर्शन, इफ वी टेक द फर्स्ट पोर्शन, x का पावर l अपॉन m है, तो m ऊपर जाके क्या बन जाएगा, l माइनस m इंटू इट इज l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर. नाउ ये फॉर्मूले से आपका रिजल्ट क्या आएगा, x टू द पावर ऑफ l क्यूब माइनस m क्यूब. Similarly, from second you will get x to the power of m cube minus n cube, and from third you will get n cube minus l cube. So all will get cancelled. L cube positive, negative, m cube positive, negative, n cube also positive and negative. So everything is getting cancelled. So x to the power of 0 is 1. So therefore the correct answer is 1. All right. Okay, perfect. Now the next one, 24. See, all these questions are quite similar. काफी कुछ सिमिलैरिटी है इसके अंदर. तो 24 भी मैं आपको करवा लेता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे देंगे, so that you can try by yourself. So now let's do 24th one. So again, formula is given a minus b whole cube. Take the correct option when x is equal to p 1/3 and minus p minus 1/3. Okay. So what is given in the question? Let's write that first. Now, the formula given is for whole cube. Whole cube. So taking cube both the sides. Let's cube on both the sides. Now, what is the formula? A cube minus b cube. So a cube minus b cube. Then it is minus 3ab. This is a and this is b. Multiply by a minus b. So this is a minus b. Okay. So we have applied the formula. Now इस formula को apply करने के बाद let's simplify. So p 1/3 is cancelled with 3. What is left? P. Then again 3 and 3 is cancelled. What is left? P to the power of minus 1, or you can say 1 upon p is left. Then minus 3 p to the power of 0. And this complete thing can be written as x because this is given in the question. Yeah, as it is आपको question में दे रखा है, so you can write this thing as x, and this side is x cube. Okay. Now, what is the next step? Take all x on left hand side. X cube minus 3x is equal to p minus 1 upon p. P minus 1 upon p. Now check which of the following option is correct. So x cube plus 3x or minus 3x, it will be plus 3x, then it is equal to p minus 1 upon p. So कौन सा option correct है? Correct option is B. Correct option is B. So in this way you can easily get your answer. Understood everybody? तो फर्स्ट स्टेप में जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, दैट वी हैव रिटन
नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। तो a का प्लेस पे क्या रखना है आपको, p वन थर्ड, एंड b के प्लेस पे क्या रखना है, p माइनस वन थर्ड। ये आपने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, एंड दिस इज द फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, now 25 clearly you can see it is a cyclical order। तो cyclical order है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। 26 is also the same cyclical order, इसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। so it is again cyclical order। तो आपका आंसर क्या आएगा, x to the power of 0 that is 1। 27 is similar to question number 24। 24 से आपका ये exactly similar है। it is exactly similar, so you can try this out। now 28 में आपको करवा देता हूं ये पैटर्न फिर से। 28 एग्जाम में कई बार आ चुका है। a to the power of x is b, b to the power of y is c, and c to the power of z is a। then what is the value of x y z? x y z आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी इजी। इफ यू वांट यू कैन राइट a की पावर x इक्वल टू b है, राइट। तो इसके अंदर हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो a का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। a का वैल्यू कितना अवेलेबल है, c to the power of z। so if you want you can put here c to the power of z whole to the power of x equal to b। now c का वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है, that is b to the power of y। so b to the power of y, and on right hand side it is b। so therefore b to the power of xyz and b to the power of 1, base is same, power will get equal, so therefore your answer will be 1। so x y z is equal to 1, this is the final answer, option number a। all right, नेक्स्ट 29, इसको भी आप इजीली समझ सकते हैं कौन सा पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है, a अपॉन b है। तो जैसे b को आप ऊपर लेके आएंगे इट विल बिकम नेगेटिव। सो x टू द पावर ऑफ a माइनस b एंड देन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इसको आप क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब। Similarly, next will be x to the power of b cube minus c cube, and then x to the power of c cube minus a cube. So everything is getting cancelled. Half of the values are positive, other half is negative. Then everything is getting cancelled. So x to the power of 0, and you are getting answer as 1. So your correct answer is 1. Okay. So few people have given the answer. Mahin has given and Renuka has given. Okay. Now the last question, that is question number 30. Question number 30. ये पैटर्न हम ऊपर कर चुके हैं, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। It's a good question. Question number 30. 2 to the power of x is equal to 3 to the power of y is equal to 6 to the power of minus z. Then you have to find out the value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. This you have to calculate. So what is the shortcut? Always assume it is equal to k. K के equal है. Now compare 1 by 1. 2 to the power of x is equal to k. This means that
2 is equal to k to the power of 1 by x. तो जब भी पावर दूसरी साइड में जाएगा, it will become reciprocal. So 2 equal to k to the power of 1 by x. Similarly, 3 to the power of y is equal to k. It means 3 is equal to k to the power of 1 by y. 6 to the power of minus z is equal to k. It means 6 is equal to k to the power of minus 1 by z. माइनस 1 by z. तो सबको आपने क्या कर लिया है, इस पैटर्न में लिख दिया है. नाउ 6 is given. 6 का मतलब क्या होता है? 6 is simply 2 multiplied by 3. 6 कैसे आता है? 2 into 3. Now apply the values. 6 means k to the power of minus 1 by z. 2 means k to the power of 1 by x. And 3 is k to the power of 1 by y. Base is same, equate the power. So 1 by z equal to 1 by x plus 1 by y. Take z on other side. So 1 by x, 1 by y, 1 by z, it is equal to 0. It is equal to 0. So correct answer is option number B. So in this way, you can get your answers. All right. Joy Banik is asking about 28. See, in 28 आपने क्या किया है? 1 by 1 value substitute किया है. You can start with any term. I've started with the first one. आपको अच्छा लगे तो सेकंड से स्टार्ट कर लें, थर्ड से स्टार्ट कर लें. स्टार्ट कहीं से भी करें, आंसर विल रिमेन सेम. सो a to the power of x is equal to b है. तो यहाँ पे आपने a का वैल्यू पुट किया है और a का वैल्यू कितना अवेलेबल था आपके पास? c to the power of z. सो a की प्लेस पे आपने अप्लाई किया है c to the power of z. देन c का वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है और c की जगह पे क्या पुट किया है? b to the power of y. Okay, and after application, when base is same, power is equal, therefore x, y, z is equal to 1. Okay, so Divya Atkali is asking clearly understood. That's great. So 28 is also done. So I think it's the easiest way. इस way में आप सारे answers कर सकते हैं. All right. Renuka is asking if there are two correct answers and we have written only one. Yes, you have to write only one. Whether two are correct, three are correct, only answer one question, one option. एक ही ऑप्शन आपको फिल करना है. ज्यादा ऑप्शन आपने फिल किया, दैट बिकम्स इनवैलिड बिकॉज यू विल गेट ओएमआर शीट. ओएमआर शीट में 4 राउंड्स आर गिवन एंड इस राउंड्स का आपको फिल करना है यूजिंग योर डार्क पेंसिल. तो पूरा इस तरह से कंप्लीटली फिलिंग होना चाहिए और उसके बाद में एक ही जगह पे आपको फिल करना है. मल्टीपल प्लेसेस पे अगर फिल कर दिया, then the computer will not read your answer and it will be treated as invalid. Okay. Perfect. So अब आपके पास नेक्स्ट टास्क क्या है इस चैप्टर के लिए? नेक्स्ट इज द असाइनमेंट. तो इसका जो भी असाइनमेंट है, आई विल शेयर यू ऑन द एप्लीकेशन. तो आप उस पर कनेक्ट रहें, असाइनमेंट को सॉल्व करें, सबमिट करें ऑन टाइम. ओके, जितने ज्यादा आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको ये चैप्टर लगने वाला है. ऑलराइट. सो और उसके अलावा जो भी अगर आपके डाउट्स है फ्रॉम दिस बुक ऑल्सो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं ऑन द एप्लीकेशन एज वेल. तो सारे डाउट्स आपके वहां पर भी सॉल्व हो जाएंगे. सो नो नीड टू वरी फॉर दैट. नाउ द नेक्स्ट सेशन
I think will be on 27, and the chapter will be logarithm. So logarithm no doubt थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और हमें उसको 2 आवर्स में पूरा कंप्लीटली फिनिश करना है। थोड़ा सा फोबिया जरूर होता है काफी लोगों को लॉगरिथम के साथ, बट हम क्लास में उसको एक प्रॉपर वे में करेंगे ताकि एक बार में इजीली हमें समझ आ सके, एंड देन अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी देयर। ऑलराइट, सो एवरीथिंग इज डन नाउ आई थिंक। एनीथिंग लेफ्ट? नो? चलिए, तो यहीं पे क्लोज करते हैं हमारा आज का सेशन। सो काफी लोगों ने इंटरेक्ट किया, दैट इज वेरी गुड। सो आपको एक हैबिट यही डालनी है कि जितना आप सेशन में इंटरेक्ट करेंगे, जितने क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उतना ज्यादा आपको याद रहने वाला है। एग्जाम में भी ये सारी चीजें आपको क्लिक करती है कि आपने क्लास में कैसे सॉल्व किया था, किस तरह से आंसर दिया था। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जितना आप इंटरेक्टिव रहेंगे उतना बेटर रहेगा। प्लस मुझे पता रहेगा कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज एक्सेट्रा। तो ये जितना पता रहेगा उतना ज्यादा मैं आपको और दे पाऊंगा। राइट? सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।